Hello friends, welcome back to Learn with Dr. Gurjit from Greenland IELTS and Immigration Services. My today's video contains the details of speaking module of IELTS. My previous video was regarding general tips of IELTS, but today's video is about specific details of specific parts of speaking of IELTS. Let's begin. I start with the details now. Speaking, as everybody knows, it's of around 11 to 14 minutes, but it is also reported that for few candidates, speaking lasts for around 30 minutes, sometimes it is of 10 minutes and so on. मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पीकिंग जनरली ਇਹਦਾ टाइम हैगा 11 ਤੋਂ 14 ਮਿੰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। कई बार ये भी देखा गया कि कुछ बच्चों की स्पीकिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट तक भी होंगी है, कई 8 मिनट, कई 10 मिनट। सो दिस इज़ वेरीएबल, मतलब ये फर्क है इस चीज़ का टाइम, बट जनरल टाइम ये कंसिडर किया जाता है। ओके, स्पीकिंग 10 पार्ट्स में होंगी है, इट इज़ इन 3 पार्ट्स, बट दीज 3 पार्ट्स आर नॉट मैंशन बाय द एग्जामिनर एनीवेयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनर तो 10 पार्ट्स कर ही नहीं दसदा, it takes place in one single stretch। एक stretch which speaking होंगी है, part 1 एग्जामिनर पहले पूछेगा, फिर तो part 2 ते ऑटोमेटिकली प्रोसीड करेगा या ले जाएगा, एंड देन फाइनली एंड्स विद part 3। ये तो सिर्फ समझाने लिए पार्ट्स दसे जाते हैं कि इट इज़ इन 3 पार्ट्स। part 1 is regarding your general introductory questions, part 2 is about cue card, part 3 is the follow-up questions। Today's video is only about part 1। I'll take up part 2 and 3 in my further videos। अगली videos ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ part 2 and 3 ਦੀ detail ਦਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ part 1 ਦੀ detail ਹੈ, that is about general introductory questions। So let's shift on to the questions। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ starting ਦੇ ਵਿੱਚ I'll give you a set of 4 to 5 questions which are asked to almost every student, ਭਾਵੇਂ ਉਹ general कैंडिडेट है या एकेडमिक कैंडिडेट है। आई मीन जनरल टेस्ट जिन्हें देना वो कैंडिडेट है या एकेडमिक स्टूडेंट है। अ सैट ऑफ 4 to 5 क्वेश्चनस पहले मैं करावांगी जिहड़े कि अप्रॉक्सीमेटली सब नूं ही उत्थे पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चनस। व्हाट इज योर फुल नेम? सो बाय फुल नेम आई मीन टू से you must mention your name whatever is given in your ID, and at that particular time your ID is your passport only। So whatever name is mentioned in your passport तुसी ओ वाला नाम examiner ਨੂੰ अपना दसना है। Let's suppose your name is Parveen Kaur in your passport, you must speak my name is Parveen Kaur। Okay, now second question, how may I address you? This question is important because बहुत सारे कैंडिडेट्स उत्थे गलती करते हैं, जो एड्रैस वर्ड सुनते हैं वो अपना पता दसन लग जाते हैं। दिस एड्रैस इज़ नॉट दैट एड्रैस, तुहाडे पते वाला एड्रैस नहीं है। वैन एग्जामिनर आस्क्स यू हाउ मे आई एड्रैस यू, तुसी क्वेश्चन का आंसर देना एग्जामिनर नू, यू कैन कॉल मी। जिवें एग्जाम्पल मैं तुहानूं दित्ती सी परवीन कौर, यू कैन कॉल मी परवीन। एंड दिस नेम, बाय दिस नेम जो रिमेनिंग स्पीकिंग होएगी एग्जामिनर तुहानूं इस नाम नाल बुलाएगा। हियर अनदर ऑप्शन तुहाडे कोल हो सकती है कि तुसी अपना निक नेम भी कह सकते हो। लेट्स सपोज योर परवीन दा निक नेम है रूबी, तुसी एग्जामिनर नूं ये भी कह सकते हो यू कैन कॉल मी रूबी। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ दिस स्पीकिंग टेस्ट एग्जामिनर तुहानूं रूबी कह के कोई अगो क्वेश्चन पुट करेगा। ओके, now I shift on to third question, may I see your ID? हुण कई कैंडिडेट्स इत्थे की करते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं या श्योर, ये इनफॉर्मल हो जाएगा, इदां दा आंसर नहीं देना एग्जामिनर नूं, इहदे नाल कैंडिडेट दी इमेज अच्छी नहीं, इंप्रैशन अच्छा नहीं पैंदा, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लगता है, एंड दिस इज़ इनफॉर्मल। तुसीं बड़ा पोलाइटली एग्जामिनर नूं आंसर देना एंड यू हैव टू से yes sir, here it is। this can be your answer। या तुसी कह सकते हो yes sir, here is my passport, क्योंकि उत्थे ID जिहड़ी उस वक्त तुहाडे कोल मौजूद है, the ID which is present there with you in the examination hall is your passport only। So you have to present your passport in front of the examiner, and that too very politely।
In my previous video also I told you कि जेडे etiquettes है, manners है, थोड़ा behavior है, वो बहुत ज़्यादा matter करता है. Okay, now I shift on to fourth question. Where do you come from? And सब दे दिमाग चाहेगा to answer जेड़ा begin करेंगे. They will start with the word I come from. Please avoid repetition. Don't use the word I come from. It is not appreciated. थोड़े skills बड़े weak लगते होते जो तुसी ये word बोलते हो. So it's the appropriate answer थोड़ा हो सकता है I hail from. If you are from Bathinda, you can say I hail from Bathinda. Or you can say I belong to Fagwada. Likewise, hail to belong from galat hai. Always remember I hail from, I belong to. I belong to Fagwada. And to elaborate it a little more, तो ये भी कह सकते हो it is a small town between Jalandhar and Ludhiana or whatsoever your destination is. If it is Batala, you can say I hail from Batala and it's a small town between Amritsar and Gurdaspur. Okay, I shift on to the next question. Do you work or study? This is important for everyone. Work is basically for general training candidates and study is for the academic candidates. Those who are appearing in general training paper, जेडे बच्चे general training के paper देंदे ने, जे उन्होंने एक question पूछा है, do you work or study? उन्होंने कहना चाहिए है, yes, I am working in so and so institute or in so and so firm, or I am working as an assistant manager, or I am working as an accountant. जो भी काम तुसी करदे हो, वो the appropriate answer you can give. Study वाले बच्चे जिन्होंने +2 कर ली होंदी है और अगों IELTS की तैयारी करते हैं, please do not mention that I am preparing for IELTS exam. It will give a very negative impression. उतना थोड़ा बहुत negative impression पाएगा because IELTS is just a screening test और examiner ये सोचता है कि IELTS की भी practice करने लिए बच्चा class लगा रहा है. Is that okay? So please don't mention your IELTS training class. For study purpose, you can say I have recently completed my senior secondary education. Are you getting it? I have recently completed my senior secondary education and at present I am planning for my higher studies. पढ़न वाले बच्चे ये आंसर दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने +2 कर ली है, काम वो कोई करते नहीं, पढ़ाई कोई कर नहीं रहे, इस करके ये एप्रोप्रिएट आंसर है कि मैं रिसेंटली हुने अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की है और मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ हायर स्टडीज़ लिए तैयारी कर रही हाँ या कर रहा हाँ. सो दिस इज़ द सेट ऑफ 4 to 5 क्वेश्चनस जेडे हर कैंडीडेट नूं पूछे ही जाते हैं. देयर इज़ अनदर टॉपिक, ये एक टॉपिक भी फर्दर आता है फिर जिहदे 3 to 4 क्वेश्चनस उहदे रिलेटेड एग्जामिनर तुहानूं पुछदा है. आई विल कंप्लीट दोज क्वेश्चनस इन माई नैक्सट वीडियो. और टॉपिक्स मैं तुहानूं इन शॉर्ट दस दिंदी हां टॉपिक्स किदां दे हो सकते हैं. टॉपिक कैन बी योर होम टाउन एंड माइंड यू वन थिंग, ये मैं जिहड़े टॉपिक्स दस रही हाँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पार्ट 1 ओनली. आई हैव नॉट येट स्टार्टेड विद पार्ट 2. वो क्यों कार्ड है, ये थोड़ा जनरल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनस का ही पार्ट है. क्वेश्चनस जो टॉपिक है वो तुहानूं हो सकता है होम टाउन से पूछ लेगा, कलर्स, फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर, मोबाइल फोन, ट्रांसपोर्ट. I mean there are number of topics. What I will do in my next video is most important topics जेडे होंगे वो मैं तुहानूं अगली वीडियो च अपने एक्सप्लेन कर दांगी. Thank you for watching today's video. Keep watching my upcoming videos to remain updated. It will be related to other modules of IELTS. Please like, comment and don't forget to subscribe. Thank you once again.